हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आपने ये वाली वीडियो तो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने वॉल शेल्फ अनबॉक्स किए थे जो कि बहुत ही अच्छे रेट में मुझे मिले थे पेटीएम मॉल पर, और घर पर इनोवेशन के काम चल रहे थे, सो इसे इंस्टॉल नहीं किया था। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा आप इंस्टॉलेशन के बाद कैसे दिखते हैं ये शेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वॉल शेल्फ है जो कि जिगजैग वॉल शेल्फ है, और इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इस तरह से दिखता है वो। और ये सेपरेट ब्लॉक्स में आते हैं, स्क्रूज वगैरह सब इसके साथ ही आते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. एंड गाइज, ये रहा सेकेंड वॉल शेल्फ जो कि हेक्सागन वॉल शेल्फ भी कहते हैं, क्योंकि हेक्सागन के शेप में है। और क्योंकि जो वॉल पर ये इंस्टॉल हो रहा था वो ग्रे कलर की थी, इसलिए मैंने इसका कलर ब्राउन से वाइट कर दिया था। एंड गाइज, ये रहा थर्ड वॉल शेल्फ जो कि इसे टेयर रैक वॉल शेल्फ कहते हैं, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इंस्टॉलेशन में क्योंकि ये एक के ऊपर एक लगता है, और कुछ इस तरह दिखेगा ये इंस्टॉलेशन के बाद। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. एंड गाइज, रही बात ये वॉल शेल्फ की जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा दिखा है, पर मैंने इसे अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। पर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ वॉल पर लगा के कैसा दिखेगा।